Loss IIT Kanpur and IIT ROPAR. This is the match number 2 of today. Got a boundary in the first over. And they will try to build a good partnership here. Will try to have that good total on the board in the first innings so that they can defend in the second innings. Oh, beautiful ball. That is beautiful ball. It's the body, and that's why he's surviving, because that would have gone onto the stumps as well. But his body coming in, and because of that, he's still able to be there in the crease. Sandeep, he's bowling his first over. Intried staff sports meet that is going on here. And this is the match number 2 of today. Bang! What a shot! Dismissed. The ball is dismissed out of the park. Amit Dore is just phenomenal at the moment. He's got a first boundary in the first over, and now a massive maximum on his name too. Wasn't that easy to pick that shot because it's a short pitch length, and he just hammered that straight. You need that. You need to have that power in the bottom hand to play that kind of a shot. Otherwise, there is always a chance to lose your wicket in that shot. Through the covers, the ball is flowing in the air, and another boundary. He's gonna get there. He's got enough timing on the ball and clears the boundary rope. It's not gonna stop when you are offering that weight, when you are offering that room to the batter. He's gonna smash you off. Came in a good position and then strikes beautifully through the covers. Wanted to make it big this over. He's having a different plan. Just want to go for the big shots. Wanted to use that power play pretty well, and he's magnificent till now. Beaten in the last. One more to go, I think. On the other side, Surya, he has just faced a ball, and rest of the balls, it has been faced by Amit itself. That's straight up in the air. That was the chance I was talking about. When you want to hit that back of lane delivery straight, there is always a chance that you have created for yourself to lose a wicket. That should have been taken though. There is a chance for caught and bowled, and he's looking at the sun. He's shining. The sun is shining. That's why I think he's not able to get the ball where the ball is going, and missed a beautiful chance. That would have been the first wicket. Would have been the first big blow. But that couldn't happen as the ball couldn't land inside the hands of the bowler there. 2 gone, it's 19 without loss. बढ़िया लय में लग रहे अमित यहाँ पे 16 पे खेल रहे हैं 11 गेंदों में दूसरे छोर से सूर्या एक ही गेंद फेस किया अब तक हल्के हाथों से खेला जरूर था सीधे खेल रहे सीधे बैट से लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के ऊपर फील्डर तैनात रहेगा और लाइन एंड लेंथ भी उसी जगह पे है काफी फुलर रख रहे दोनों गेंदबाज लेकिन जिस तरह से अमित बैटिंग कर रहा है तो सूर्या का काम आसान है जस्ट आइए और सिंगल निकाल के स्ट्राइक पे लाइए अमित को यही सोच रहेगी अमित की यही सोच रहेगी सूर्या की स्लो रन का इस्तेमाल पिक अच्छे से किया नहीं
तीसरी ओवर चल रही है, अभी तक डिसेंट स्टार्ट मिल चुका है और क्रेडिट देना पड़ेगा अमित के उस शॉट्स को। पिछले ओवर में चांस जरूर बना था लेकिन वो लपक नहीं पाया कैच। कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे लेकिन गेंद छिटक गई कीपर के हाथों से भी। ये चौका देखे जाएगा, बीट तो जरूर किया था लेकिन वो 4 रन हासिल किए अपने टोटल में ऐड किए। अच्छा बॉल था ये, बिल्कुल जड़ों में रखा, कोई मौका दिया नहीं, फॉलो किया था बैटर को कहीं ना कहीं। सूर्या वहां पे क्रीज पे मौजूद थे और ये एंजॉय करेंगे ये रन्स को। ये तोहफा मिला है, क्रिसमस आ चुका है। मेरी क्रिसमस टू ऑल द व्यूअर्स and he's receiving the gift is as in the form of that buys. Connection wasn't there. One more drop catch. That's gonna prove them costly for sure. 2 overs, 2 chances were created. That should have been taken. Like a simple catch. You just have to maintain your balance. And the ball is coming towards him. It's not the case that he has to run for the ball. Exactly where he was standing, the ball was coming towards him. But one more dropped catch. Both the batters have got that chances. Now they'll try to capitalize. Will they be able to capitalize? That's what we need to see now. Cannot give that opportunity to the opening pair. It would have been the second wicket if you calculate that number of drop catches. We have seen that Amit got a chance. The ball went straight up in the air, touching the sky. And the bowler was there, ready for the take, but unable to take that catch in his hands. And then in this over, Amit created that opportunity. The fielder was right there. Surya, the batter, was wanted to clear the fielder off mid-on, unable to get it. The fielder got hands on the ball, but in the end dropped it. Leg cutter that was. We'll get an idea by looking at his wrist what the ball is he's gonna ball. And that is a basic way. If you are not able to identify what the ball is balling, just look at his wrist position. You will get that idea. 26 without loss after 3. तीन ओवर में 2 चांसेस क्रिएट किए थे। वहां पे एक पकड़ लाना चाहिए था, बिल्कुल वो सॉफ्ट डिसमिसल हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। हमें जिस तरह से वो लय दिख रही थी उनकी, तो उनका वो कैच छोड़ना कितना कॉस्टली प्रूव होगा ये अब देखने वाली बात है। संदीप अपॉर्चुनिटी तो क्रिएट कर रहे हैं, पिछले ओवर में भी उन्होंने फंसाया था अमित को। वो बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था लेकिन सीधा ऊपर चली गई थी गेंद, कैच हो नहीं पाया, पकड़ नहीं पाया अपने हाथों में। ये लॉन्च किया है लेकिन फील्डर मौजूद है, एक ही मिल पाएगा। कमाल का शॉट था ये, थोड़ा सा आगे की और किया था, संपर्क बेहतरीन लेकिन उतना भी बेहतरीन नहीं तो जो चौका देखी जाए। फील्डर तैनात बिल्कुल सही जगह पे। खासकर आपको पावर प्ले में विकेट चाहिए होते हैं तो वहां पे आपको सपोर्ट लगता है फील्डर्स का, कहीं ना कहीं जोर से अपील हो रही है लेकिन इंटरेस्टेड नहीं है अंपायर। करीबी हो सकता था मामला ये लेकिन बच गए। तो फील्डर से आपको सपोर्ट की जरूरत होती है, टीम वर्क लगता है आपको। अकेले आके आप बहुत बार विकेट्स नहीं चटका पाएंगे, एक आध बार आप जरूर कर सकते हैं वो कारनामा, बोल्ड कर सकते हैं बैटर को। इस बार भी बहुत बेहतरीन प्रहार था ये, गेंद को मानो काटा था अपने तलवार से, ऐसा लगा। बहुत ही जोर से वो प्रहार किया था, कट किया था, बैकफुट पे गए थे और फिर
दिशा दिखाई थी, जोर से बल्ला घुमाया था. And now the flick of wrist coming in. Just a delicate touch on the ball with the bat to get a single. And that's what a good idea the batter should apply. Hit that ball out of the park each and every ball. And that's why the best way is to get that strike rotation. The fielder will be there at the long off. Only a single he's going to take with that occasion. Four gone. It's 31 without loss. IIT Kanpur. We'll have that two more overs left in the power play. So we'll need to check upon that. Which total they want to bring. Which total they can bring on the board. We'll try to use that power play. We'll try to use that field restrictions. Two more overs. That means 12 more balls are there in the power play. Amit Rawat is going to continue from other end. Beautiful pitch of delivery, absolutely. Slow one towards a good way to start it over. That's going to create the trouble. That's going to create that confusion in the batter's mind. If you are able to have that slow ones in your pocket, it's always going to get the trouble for the batters. Short third man is there in place. Balled him totally. Cleans the middle stump. And it's a first breakthrough. Amit is able to deliver. They were searching for the wicket. And bang! That is gonna be a big blow because they've got a wicket of Amit. He was playing at his level best. He's clearing the boundary. He's having that capacity to go for the big shots. And Amit Rawat has dismissed him. He's gone. 31 for 1 is the score now. Oh, it was brilliant ball. It was delightful to watch that stump that is dismissing off out of the ground. Oh, that's a full toss. Good stop by the short fine leg fielder. That shot squarely is in place and stopped by diving to his right. Good stop that is. And once you get a wicket, whole team is gonna charge up. Whole team want to have that impact. Smacked it nicely, but the appeal was there. I think it came from the bat itself, so no excitement in that. Flicks towards the fine leg and got a boundary.
We'll try to maintain that strike rate. We'll try to have that enough runs on the board at the end of the power play. That is his mindset, and that's again a gift. You cannot ball onto the pads of the batter. We'll be getting that width, and also you don't have that fielder at the boundary line, at the square leg and the fine leg, so it's gonna be a gift for the batter. I think it's a close call, lot of appeal, but two chances has been created. One with the LBW and then with the run out, but run out couldn't happen as the ball couldn't hit the stumps. He survives somehow. Five gone, it's 36 for 1, IIT Kanpur. Now that is going to be the last over of power play. Let's see what they can do in this last over of power play. Govind, he's just coming in. He has faced one ball and then trapped a single. He's able to get off the mark on the first ball that he faced. Sachin Chaudhary, the new bowler coming in, and he's going to ball the crucial over. He exactly knew what needs to be done because the captain has given the responsibility to ball in the crucial over. You must be getting an idea what needs to be done. A clear message will be try not to give that boundaries and maximums. Try to have the tight bowling in tight areas. Good ball to start with. I've started with a dot. And Govind, it's not easy for him to pick that. It's not easy for him to go for the lofted shot, but he can do that track rotation. It was a gift. Misfield, and you cannot do that. The bowler is trying to create that pressure. He's targeting that good areas, but if you're not getting that support from the field, and that is not the first time that has happened because you have seen that drop catches previously because that's going to trouble the bowlers. 40 for 1. It's a decent total they are able to put on board. Still 4 more balls to go in this power play. Smacked away. Finds a fielder at the point. Again a dot. Would have been the third dot, but the misfield happened in the previous ball, and that's why. 4 runs coming in from 4 balls, including that boundary, and then 3 dots. He's keeping it to the nice areas. Hitting the pads, but he's surely gonna miss that leg stump. He's having that variation also. He's bowling that quicker ones in between and then giving that flight. Good bowling so far from Sachin Chaudhary. Dot to end that over. That means only 4 came from that and 1 extra run with the leg buys. 41 for 1 is the score after 6. And that is a good power play, I believe. You're able to get somewhere closer to 40, 50, then it's a good strike rate that you are maintaining, and that is going to help you going forward. Yes, they have lost the first wicket in that, but still they have 9 wickets left in their hand. So it's always a tricky thing to do in the middle overs. A lot is dependent on the middle overs. If they're able to get survive in the middle overs, then they can put a massive amount of total on the board in the first innings.
Sumnendra Singh is the new bowler coming in. He's coming around the wicket for the right-handed batter. Started off with a single there. Fielder must be there. The boundary line. Coming back for the second. A mix-up, a slight mix-up, but they are safe as the throw wasn't into a right location. यहाँ से आप स्पिनर्स को कैसे टैकल करते हैं इसके ऊपर सारा तारोमदार है. 43 पे एक अच्छा स्टार्ट दिला दिया है आईआईटी कानपुर ने. और आईआईटी रोपर को भी वो विकेट मिल चुकी है, लेकिन यहाँ से और सफलता चाहेंगे और विकेट्स चाहेंगे. वो जितनी लंबी पार्टनरशिप बनेगी तो फिर उतना ही ज्यादा परेशान करेंगे आने वाले समय में ये बैटर्स. बड़ा शॉट हवा में, लेकिन सेफ है. कोई मौजूद थे ना, था नहीं उस एरिया में, तो फिर बच गए. थोड़ी सी जोखिम उठाई थी जरूर. और पावर प्ले भी खत्म हो चुका है, तो फिर संभाल के खेलने की जरूरत, क्योंकि अब फील्ड खुली होगी. इतना आसान होगा नहीं अब बड़े शॉट खेलना. डिस्टेंस इतना होना चाहिए, फिर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अब वो दूरी तय कर पाएगा, नहीं तो फिर हमेशा हाथों में आने का चांस रहता है फील्डर के. सिंगल, ये अच्छी रणनीति है, और यहाँ पे आपको आसानी से वो सिंगल मिल जाएगा. जोखिम उठाने की जरूरत नहीं है. थोड़ा सा और गेम को डीप लेके चाहिए, फिर आप अब अपने बाजू को खोल सकते हो. तब तक थोड़ी सी शांति रखने की जरूरत. रन अपने आप आएंगे. आप अगर प्लेस करोगे बॉल को, तो फिर 6-7 रन आसानी से आप प्राप्त कर पाएंगे हर एक ओवर में. बड़ा शॉट डाउन द ग्राउंड. डिस्टेंस कितना? कुछ खास डिस्टेंस था नहीं. एक और कैच छूटा है यहाँ पे, एक और मौका छोड़ते हुए. ये कहीं ना कहीं छुपेगा. ये चौथी सफलता हो सकती थी अब तक. 3 ड्रॉप कैचेस. ये नाखुश रहेंगे कप्तान. हवा में जरूर गई थी, काफी ऊंची गई थी, लेकिन ना बिल्कुल अपने हाथों में आ रही थी. तो कहीं ना कहीं बॉलर खुद रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वही खड़े थे कैच के लिए. वो चांस छूटा है. 7 के बाद 47 पे एक आईआईटी कानपुर. Well, you need to have that very tight fielding at the back, because that is going to be the game changer. And it has happened multiple times in this game. Would have been a complete different scenario we would be able to see if they would have taken that catches. That's not happened, and that's why we're still having that a wicket on the name. Only a wicket. Sachin Chaudhary is going to continue. Pick that nicely. It's in the gap. Pierce the gap for 4. He's converted that into full toss. He came a step forward, and then just a flick of wrist to get a boundary. Having that good position and a proper connection with the bat. Gap was definitely there between the square leg and the mid wicket, and he chose that to get a boundary. Wanted to smash it hard. That impact was outside off. He literally came down the track, came towards the off stump, wanted to hit it towards the fine leg, covering the stumps a bit. Chipped it in the air this time for a while to get a single.
52 for 1 is the score. So 50 comes up on the board early in this game. Land a big shot, but haven't got a good connection with the batter. Only a single. A good strategy. That's a sensible batting by these two batters. They've got a boundary. They've done their job of hitting a good shot in each and every over, and then they are dealing with the singles and doubles. Flight on offer. Only a single he's gonna get. Keeping the strike on the next over, Surya. 54 for 1 is gonna be the score of trade. Sumnendra Singh, he's bowling his second over. Just created a chance for himself in the previous over. He would be disappointed to get not to take that chance. That's why they are able to build a good partnership here. Plenty of chances these two batters have got already. Need to capitalize now. Finds the cap again, I think. He's gonna get a boundary. The ball slowly wins the race there. At the last moment, he came in a frame, but he's late to react. By the time he came in the frame, the ball already moving on to the boundary rope. Got a boundary at the first ball. Pure connection, proper placement, and got a boundary. He's welcomed the bowler. That's straight up in the air. Takes the aerial route. The fielder should be under it. No. Just away from the fielder. Entered into the no man's land again. So fortune is supporting them at the moment. Plenty of miss hits where we have seen from these two batters, and still they're surviving. Govind on strike now. Aged. Haven't got that proper connection. The ball swings in his hand, I think. That's why I haven't got a good connection. Haven't got this distance that he was looking for. Takes the aerial route. Has he got the distance? Again, no fielder is there. How many times the fortune is going to support these two batters? That's the question. And bit of misfield also in between. From the start of the game, we have seen that misfields. That's why these two batters are there on the crease. Have to plan to make it big now. Again, away from the fielder. Over the head of the fielder there. Able to stop at the right moment at the boundary line. Trapped some runs in board. आज आने वाला नहीं है हाथों में फील्ड लक वो किस्मत बहुत बुरी चीज होती है कभी कभार ऊपर से जा रही है नो मैंस लैंड में भी गिर रही है लेकिन हाथों में नहीं गिर रही है यही दिक्कत है
एक जस्ट पुश किया, चाहते थे कि वो सिंगल हासिल किया लेकिन नहीं कर पाए। 9 के बाद 63 पे एक आईआईटी कानपुर, रोपर को विकेट चाहिए, वो तलाश जरूर जारी है लेकिन वो आपको फील्डिंग टाइट करनी पड़ेगी, तब तक वो विकेट हाथों में आने वाली नहीं है। अब तक बहुत सारे कैचेस छूटे, यहाँ से आगे देखना पड़ेगा। जो भी कैच आएगा, जो भी मौका मिलेगा तो वहां पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो सपोर्ट लगेगा फील्डर्स का भी। हल्के हाथों से खेला और सिंगल चुरा ली, ये भी करने वाली बात है, ये भी देखने वाली बात है। तो स्ट्राइक रोटेशन जितना आप करोगे उतना ही प्रेशर होगा नहीं आपके ऊपर, वो बिल्ड होगा नहीं, और फिर आप आराम से गेम को डीप में ले जा सकते हो सिंगल सेवल के साथ। फिर 15वें ओवर तक ये कारनामा करने के बाद फिर आपको वो मौका मिलता है। आप खुद भी सेट हो चुके होते हो तो आपको पता होता है कि कौन सी बॉल कहाँ पे मारनी है। फील्डर से दूर इस बार भी, वो किस्मत साथ दे रही है तो फिर आप वो रिस्क लेना नहीं चाहेंगे आप, क्योंकि अभी तक अच्छा खासा साथ दिया है किस्मत ने इनका। बड़े शॉट्स भी लगाने की कोशिश की थी लेकिन नो मैंस लैंड में गिरी गेंद बार बार, उसके बाद में कहीं ना कहीं वो मिस फील्ड। तो अब चाहेंगे ये दो बल्लेबाज कि बड़े इनिंग्स में तब्दील किया जाए अपने स्कोर को। गोविंद 13 पे बैटिंग कर रहे, दूसरे छोर पे सूर्या 25 पे पहुंच चुके हैं 23 गेंदों में। 30 डाली थी इस बार, ऑफ स्टंप को हिट करने की कोशिश, वहां पे वो लाइन एंड लेंथ हिट कर रहे बार बार उसी एरियाज में गेंद को। एक मिल पाएगा यहाँ पे, अभी तक ये अच्छी ओवर, दूसरे के लिए आना चाहते हैं और चुरा लिया है। देखिए ये आपको देखने के लिए मिलेगा बार बार, क्योंकि बाउंड्री बहुत बहुत दूर है और फील्डिंग ओपन हो चुकी है। जैसे पावर प्ले खत्म होता है तो फिर आपको वो मौका मिलता है सिंगल्स को डबल्स में कन्वर्ट करने का, और वैसे ही कर रहे बार बार लगातार। स्मैश किया था लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में। 3 रन केवल आए इस ओवर में, एक आखिरी गेंद बची है सचिन के तीसरे ओवर की। अच्छी गेंदबाजी आगे रख रहे, बिल्कुल मौका देना नहीं चाहते बाजू को खोलने का। लॉन्ग ऑफ के ऊपर फील्डर तैनात है, एक ही रन मिल पाएगा अगले ओवर में, स्ट्राइक रखेंगे अपने पास। 10 के बाद 67 पे एक आईआईटी कानपुर।
आधी इनिंग यहाँ पे समाप्त हो चुकी है। यहाँ से अब गियर्स शिफ्ट करने के बारे में सोचेंगे। एक बल्लेबाज वो बड़े शॉट के लिए जाएगा, दूसरा उनको सपोर्ट करेगा, साथ निभाने की कोशिश रहेगी। तो एक साथी होगा और ये एक हिटर। तो कौन कौन सा रोल अपनाएगा ये अब आने वाला समय बताएगा। 10 ओवर का खेल बाकी है। यहाँ से 150 का लक्ष्य होगा क्योंकि विकेट्स हैंड्स में, विकेट्स बिल्कुल मौजूद है उनके पास। एक ही विकेट गिरी है। सुरेंद्र सिंह कंटिन्यू करेंगे अपने तीसरी ओवर डालने के लिए, बिल्कुल सच। विकेट का कॉलम फिल करना पड़ेगा अब गेंदबाजों को। वो अभी तक फिल हुआ नहीं है, केवल एक ही विकेट आई है। उसके बाद में ये पार्टनरशिप काफी बढ़िया बिल्ड हो चुकी है। इस पार्टनरशिप के ऊपर रोक लगाना चाहेंगे बॉलर्स, और दूसरे छोर से बैटर्स की यही कोशिश रहेगी कि गेम को आखिर तक ले जाया जाए, डीप में ले जाया जाए कैसे भी करके। एज लगा, फील्डर से एक बार फिर से दूर। आज ये किस्मत पूरी तरह से आईआईटी कानपुर के फेवर में। ये कितने बार न जाने हमने देखा है कि बॉल ऊपर गई है लेकिन फील्डर के पास आई नहीं है ठीक तरीके से। आ गया इस बार डाउन द ग्राउंड, और इस बार वो सफलता और राहत की सांस आईआईटी रोपार को। कनेक्शन इस बार बेहतरीन हुआ लेकिन सीधा फील्डर को ढूंढ लिया, तलाश लिया फील्डर ने उस शॉट को। उस शॉट ने फील्डर को तलाश लिया सीधा। बॉल बहुत दूर गई थी लेकिन उतनी भी दूर नहीं जो दूरी तय कर पाए। सीधा हाथों में मार बैठे। तो सूर्या का खेल समाप्त। 25 रन बनाए उन्होंने, लेकिन अब जाना होगा वापिस पैविलियन। इस विकेट की काफी तलाश थी आईआईटी रोपार को, और ये पहले ही आ सकती थी लेकिन वो ड्रॉप कैचेस, मिस फील्ड, उस वजह से कहीं ना कहीं वो प्रेशर बना नहीं बैटर्स के ऊपर। हर एक बार बड़े शॉट के लिए जा रहे थे लेकिन ना कहीं गेंद बीच में गिर रही थी दोनों फील्डर्स के, और जब मौका मिला तो फील्डर्स ने वो लिया नहीं। इस बार कोई गलती नहीं, अच्छा कैच है लॉन्ग ऑन के फील्डर का। पार्टनरशिप के पार्टनरशिप के ऊपर ब्रेक लगाना जरूरी था और यहाँ पे लग गया है। सुमेंद्र ने वो करके दिखाया, कॉलम को फील किया, विकेट अपने नाम की, और अब यहाँ से दबाव में डालना चाहेंगे आने वाले बल्लेबाजों को। 11वीं ओवर चल रही है। एक आध विकेट यहाँ पे और चटका पाएंगे क्योंकि नए बल्लेबाज जब आते हैं तो फिर वो समय लेते हैं। तीर की तरह सीधा लेकिन संपर्क उतना खास नहीं। पहले गेंद पे वो खाता खोलेंगे धर्मा, स्ट्रेट बैट के साथ खेलना चाहते थे, संपर्क का खास हुआ नहीं, उस वजह से सिंगल के साथ संतुष्ट। Wanted to go for the big shot, Govin, but that's a smart bowling there. He's very smart, he's very clever. He exactly knew where he's gonna hit that, and that's why he kept it out of his arc. It's coming around the wicket, and then he chose that line outside the off stump, kept it wide. Too much flight again. The connection we have to see gone. The same fielder, the same result, and the same bowler lost that second wicket. That's what we were talking about. There is always a chance when the new batter comes in. You will always have that chance to get that wicket. And Samendra sums that up. Got another wicket on his name. The batters will be under pressure for sure, as they have lost that 2 wickets in the same over. 70 for 3 is the score.
जो गलतियां की थी फील्डर ने वो सब भूल जाएंगे अब, क्योंकि एक ही ओवर वो गेम चेंजिंग रहा। विकेट की तलाश जारी थी, विकेट आ नहीं रही थी, लेकिन देखिए किस्मत देखिए, मेहनत तो है लेकिन हम बोल ही रहे थे इसके ऊपर कि फील्डर के पास जा नहीं रही थी गेंद, बहुत खतरा उठा रहे थे बैटर्स, लेकिन विकेट आ नहीं रही थी। और जब आई तो फिर बैक टू बैक आई, एक ही ओवर और 2 विकेट समनेन्द्र के नाम। ये फिर से डालनी पड़ेगी, बहुत बाहर गई। ये राइट हैंड बैटर के खिलाफ अच्छी है, लेकिन अब लेफ्ट हैंडर मौजूद है। ओहो, ये होता है कभी कभार, आप उस जोन में होते हैं, दोनों तरफ से राइट हैंडेड बैटर्स थे, तो कहीं ना कहीं वो एरिया आपके दिमाग में रहता है। एक बार फिर से वो वाइट, इसी के बारे में बात कर रहे हैं, जब भी वो दो है लेफ्ट, दो राइट हैंडेड बैटर्स रहते हैं तो फिर आपका प्लान प्रॉपर रहता है, और इसीलिए कहीं ना कहीं लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन आता है तो फिर बॉलर के लिए दिक्कत होती है। बार बार अपने एरियाज को अच्छे से करने की जरूरत होती है। एक बार फिर से हवा में है, फील्डर आएगा क्या नीचे, इस बार भी लपक लिया है, ये तीसरा झटका, विकेटों की बरसात हो रही है यहाँ पे। आईआईटी रोपर बैक इन एक्शन, उसी अंदाज में खेलना चाहते थे, लॉन्ग ऑफ की दिशा में इस बार भेजा था बॉल को, और कोई गलती की नहीं फील्डर ने, यही साथ होना जरूरी है। फील्डर ने दिया है इस बार बॉलर का साथ, विकेट चटकाई है सुमेंद्र ने, तीसरी, एक ही ओवर में 3 बड़े झटके, बहुत ही बढ़िया ये ओवर, 11 के बाद 72 पे 4। Well, that was a mood turning over for the fans of IIT Ropa. Plenty of drop catches in the initial overs, and then one over came, and everything is vanished. That mistakes are vanished totally, because they are able to fill that column of wickets in a single over. 3 wickets Sunmindra has been taken in the same over, and three that were an action replay. Long off and long on fielder was in place, and the batters find it. They are able to find that fielder straight away. यहाँ से गेम बदलेगा थोड़ा, जिस लय की बात कर रहे थे, तो शुरुआत से थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे बैटर्स, लेकिन अच्छी पार्टनरशिप भी पनप रही थी। लेकिन जैसे ही वो विकेट आई उसके बाद में देखिए 2 और विकेट आए एक ही ओवर में। हम उसके बारे में बात कर ही रहे थे कि थोड़ा यहाँ पे परेशानी होगी नए आने वाले बल्लेबाजों के लिए, जो नया होगा क्रीज पे, इतना आसान है नहीं। हल्के हाथों से खेला, यहाँ पे थोड़ा सा अब संभाल के खेलने की कोशिश करनी होगी दोनों बल्लेबाजों को। पहले एक बड़ी पार्टनरशिप चाहिए, उसके बाद में 15वें ओवर के बाद आप प्रेस कर सकते हो। कहना आसान है, करना मुश्किल, क्योंकि यहाँ पे इन्विटेशन देंगे जरूर बॉलर्स, थोड़ी सी फ्लाइट देंगे, उछाल देंगे, ताकि वो इन्विटेशन लगे बैटर्स को, और फिर वो बड़ा प्रहार करने के लिए जाएंगे तो फिर विकेट आने की संभावना रहती है। सिंगल चाहते थे लेकिन मिलेगा नहीं, वो इंतजार करना पड़ेगा। और यही होता है जब बैक टू बैक विकेट्स गिरते हैं तो फिर वो सिंगल स्ट्राइक रोटेशन बंद होता है। एक नहीं, दो नहीं, 3 विकेट आए एक ही ओवर में, तो फिर दबाव होगा। सुनील कुमार अब समय ले सकते थोड़ा, गाइड किया, सिंगल हासिल किया, और खाता खुला।
played with the soft hands to end that over. Sachin completes his spell and he's not going to get that column field. It's empty out there in its wicket column, but he's supported well. He's trying to create that pressure. And 17 runs he has given in that 4 overs. 12 overs gone, it's 74 for 4. IIT Kanpur. Sumnendra Singh is going to continue. He's got already 3 wickets in a single over and created that tremendous amount of pressure on the batters. He's bowling his last over of his spell. Still looking for the wickets there. That height was the issue there. That's why you can see that no excitement is there in that appeal. They also know that it's not going to hit that stumps. That height was the biggest issue there. Kept it wide, just inside the line, and that's why it's a legal delivery, said the umpire. The confidence is on the next level for Sumendra. The way he pulled the last over, everything has worked. Again, a lofted shot. We have to check the distance. Oh, that's a massive maximum. Focused on the timing and got a result there. Need to check upon that. It's whether it's a boundary or a maximum. The umpires are checking on the same. But what a shot that is! Picked that up nicely and sweeps it off through the square leg. Yes, that is the boundary. That's what we were talking about. He's flighting the ball. He's giving that flight. He knew that the batters are going to make a mistake there. He want that. That's why he's fearless now. He's skipping the ball, giving the ball flight. Invitation he's sending again and again. Govind is playing at 18, still hanging in there. He's not going to play that big shot now. He saw that his partner's losing a wicket again and again in the same over of Sumanendra, so he's going to keep the calm, especially when he's batting against Sumanendra. Cuts that fine, but the fielder is right there, the short third man. Still going to get a single. And that comes the end of the spell of Sumnendra. 4 overs he has bowled, 25 runs and 3 big wickets in a single over. That's the story he has to tell, and wonderful job done for the team. 80 for 4 after 13 is the score. आखिरी के 7 ओवर बचते हैं यहाँ से, कहीं ना कहीं दबदबा है बॉलर्स का। एक ओवर क्या कुछ कर सकती है, आपको ठीक तरीके से पता चल गया होगा। सुमनेंद्र की एक ओवर ने पूरी कहानी पलट दी। 62 पे 1 शायद था वो स्कोर। उसके बाद में कहीं ना कहीं वो विकेटों की बरसात पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया बैटिंग लाइनअप को और मिडिल ऑर्डर बैटर्स को।
बिल्कुल नीचे रखा ब्लॉक होल में। जसप्रीत सिंह एक नया विकल्प लेके आए हैं, गेंदबाजी में परिवर्तन। आईआईटी कानपुर ने टॉस जीत के कहीं ना कहीं बल्लेबाजी का किया था फैसला। उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठेगा। कुछ सोचेंगे क्या वो सही फैसला था या नहीं, लेकिन इसके लिए काफी टाइम है क्योंकि अभी भी 7 ओवर बाकी है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से वो सुनील खेल रहे, कैप में बॉल को भेज रहे, काबिल तारीफ। अच्छा स्टॉप है ये, एक फ्रेम में नहीं थे। वो अच्छा रोका है बाउंड्री पे। फुटवर्क काफी अच्छा, उसी के लिए फुटबॉल की प्रैक्टिस होती है। क्रिकेट के गेम से पहले हमने देखा है इंडियन टीम को भी प्रैक्टिस काफी ज्यादा करते हैं और प्रैक्टिस सेशन का एक हिस्सा होता है फुटबॉल। इस बार कोई रोक नहीं पाएगा। विड्थ दे नहीं सकते, रूम मिलेगी तो फिर यही परिणाम होगा, चाहे वो नया बैटर हो या फिर पुराना। अच्छे पोजीशन में आया, उसके बाद में पीछे की ओर भेजा बॉल को, फाइन लेग की दिशा में चौका हासिल किया। कोई फील्डर मौजूद नहीं, तो शॉर्ट फाइन लेग को बीट किया, उससे दूर देखते रह गए बस। Wanted to stop the ball there, but the ball hasn't got an idea of where the ball was going. Has he got the distance? That's what we need to see. Yes, yes, he's got that distance. He played that intentionally in the gap. He exactly knew where the field placement is, and he's just destroying the field placement. The fielder wasn't there. That's why he played that lofted shot, and that's the innings we all were waiting for. He just came in and just clearing the boundaries, dealing with the lofted shots, taking that calculated risk, and destroying the scoreboard. Dot to end that over. But 13 runs came from that over of Jasprit. Two boundaries and then singles and doubles. 14 gone, it's 93 for 4. Sunil Kumar is just adding that runs on the scoreboard. He's dealing with the boundaries and the maximums. Need that player who can come and destroy the scoreboard. At the right moment, he came and he just released a tremendous amount of pressure from the batters. And he's confident in each and every shot. He's definitely playing that lofted shot, but if you see, he's playing that risk-free shot as he's able to hit that in the gap. Still have that 6 overs left. Would be interesting to see which total they can bring on the board in the first innings. Even the new bowler coming in. Smash that off. Oh, he's
just felt short. Was looking into the ball, and then focus was totally given. His concentration was superb. Just dives towards the line of the ball, and then just felt short in the end. His foot was superb. Lot of appeal in that. Surely missed that leg stump there. Leg stump is the only issue. Dot ball. Sunil Kumar is on strike. I think they have stolen a single in that. Yes, they have got it. That came with the leg buys, and now it's this destructive batter. Sunil Kumar is on strike. Aged but safe. Third man fielder is inside the circle. Still not able to pick the ball in his hands. The ball went up in the air for a while. He's safe in that. Flight on offer, full toss it is, and bang! He's hammered that. Is very good with the bat in today's game. That is a gift totally. For the full toss, smash the ball through the covers to get a boundary. With that, 100 comes up on the board for IIT Kanpur. One more beauty, one more boundary. He's now dealing with the boundaries, hitting the ball again and again outside the boundary line. And that is gonna be his routine. The way he's batting at the moment is just exploding. He's giving that statement that that's how I'm gonna play. That is the second boundary of this over. Back-to-back boundaries in this over. 104 for 1. 4 is the score. Still one ball left in this 15th over. Flick of wrist. Finds the gap. Only a single on that occasion, but it's good because he's going to keep that strike in the next over too. 15 gone, it's 105 for 4, IIT Kanpur. Now, last 5 overs are remaining here. I think they will be aiming for 140, 150, and that's quite possible the way Sunil Kumar is batting. And now Govind also, he's moving on to the 20s. So these two batters have settled themselves down and ready for the death overs there. It's in the gap, but only a small gap was there. Only a single can be done in that. He's playing at 28 from 18.
That's a magnificent start he has got. Govin also will try to free his arms now. He's he's giving a good support to Sunil there because Chauhan, the new bowler, one more change in the bowling we are able to see here. They're forced to change the bowlers again and again. I think that catch has been dropped. We need to check on that again. Surely gonna surely gonna take a single in that. It's a good over so far from Vikas. Has bowled four balls and still only 2 runs came in in this over. They need this kind of overs more. Need to stop that partnership. Need to get a wicket of Sunil Kumar, especially because he's just exploding the scoreboard and smashing that all outside the boundaries. Again, Playanam is able to find that gap between the bats and the pad, and he's just magnificent with that. 16 gone. It's 108 for four. Only 2 runs came from Vikas over. You need that overs more. If you want to finish it on a sweet note, then you need that good overs. 4 overs, 24 balls left. The batters will be aiming of 140, 150. It's still possible. The way these two batters carrying that burden and carrying the momentum, it's is possible. Not able to get that. Looking for the connection, and the last over was brilliant. He was brilliant in the bowling. That one good thing is they're keeping away from the batter's sag, and that misfield need to take care of that. They're just trying to build a pressure by hitting that good areas, but if they're not able to get that support from the fielders, then the pressure is gonna released again from the batters. Need to maintain that pressure, and for that you need that teamwork. Got a good connection, but finds a fielder. 2 dots. Not a bad start to this over. 110 लग चुका है बोर्ड पे. अभी यहाँ से 30-40 रन यहाँ पे और चाहिए, और यही प्लान रहेगा कैसे भी करके वो 140 के ऊपर वो टोटल जा पाए. यहाँ पे और विकेट्स मिल गए तो फिर कहानी चेंज हो सकती है. वाइड एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन लाइन के अंदर थे और फॉलो किया था बॉल को, तो उस वजह से वाइड मिलेगा नहीं. सिंगल आसानी से मिल जाएगा. सिंगल के साथ कोई परेशानी हो गई नहीं बॉलर्स को. जिस तरह से पिटाई हो रही थी पिछले पिछले कुछ ओवर्स में, तो फिर ये अच्छा कमबैक मैं कहूंगा पिछले 2 ओवर्स से अब तक. केवल सिंगल्स डबल्स मिल रहे. पिछले ओवर में भी 2 रन आए, इस ओवर में केवल 3 रन. तो ये 2 ओवर्स की तलाश थी कहीं ना कहीं बॉलर्स को. 112 पे 4 17 के बाद.
विकास चौहान ये कंटिन्यू करेंगे। 2 रन दिए थे पहले ओवर में। दबाव बना के रखना चाहते वो। 140 से पहले रोकना चाहते। स्कूप करने का प्रयास। हवा में बॉल थी लेकिन खतरे से दूर। फील्डर मौजूद थे कहीं ना कहीं शॉट थर्ड मैन की दिशा में, लेकिन उससे काफी आगे गिरी गेंद उस वजह से अभी भी मैदान पे डटे हुए हैं। एक ही मिल पाएगा एक बार फिर से। ये दूसरे में कन्वर्ट हो सकता है। क्या हुआ है? नहीं, सिंगल के साथ संतुष्टि। 113 पे 4 स्कोर है। अच्छा कमबैक है बॉलर्स का पिछले कुछ ओवर्स से। वो एक ही ओवर में कहीं ना कहीं दो चौके आए और लगातार 2 ओवर ऐसे गिरे, उसके बाद में ये अच्छा कमबैक है। एक मिल पाएगा, दूसरे के लिए आना चाहेंगे, आ भी जाएंगे शायद। हो जाएगा कंप्लीट ये दूसरा भी। केवल एक मैक्सिमम आ चुका है इस इनिंग्स में। 11 चौके, उसके अलावा सिंगल्स डबल्स। उठा के मारने की कोशिश, लॉन्ग ऑफ के ऊपर फील्डर तैनात है और अच्छा रोक लिया है। अच्छी फील्डिंग, ये चाहिए होता है आपको। साथ निभाया इस बार वो फील्डर ने। जितने आप बाउंड्रीज रोकते हो उतना ही आपके लिए सही है। अपील काफी जोर से, लेकिन ना वो उंगली उठी नहीं अंपायर की। डॉट गेंद। कमाल की गेंदबाजी विकास की। इस ओवर में भी केवल 6 रन आए। 18वीं ओवर चल रही है ये। 1 रन के साथ स्ट्राइक रखेंगे शायद अपने पास अगले ओवर में सुनील। 18 के बाद 119 पे 4 IIT कानपुर। बाउंड्री अगर पहले बॉल पे आ गई तो फिर वो प्रेशर बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा बॉलर के ऊपर का। 19 से ओवर किए, अच्छी स्टार्ट मिली है उनको। कैप में भेजा बॉल को और पहले ही गेंद पे वो चौका हासिल किया। एक बार फिर से गैप में है। एक बार फिर से बाउंड्री चाहते हैं लेकिन मिलेगी नहीं। 2 रन आसानी से प्राप्त करेंगे। पहले गेंद पे चौका, उसके बाद डबल, तो 2 गेंदों में 6 रन आ चुके हैं। कट करना चाहते थे, इस बार भी मिस हो गए। तो सिंगल जरूर मिल पाएगा। ये अच्छी पार्टनरशिप बन रही है।
एक के बाद एक लगातार विकेट गिरी थी एक समय में। सुमनेन्द्र ने वो 3 विकेट एक ही ओवर में चटका के पूरी तरह से बाजी मारी थी। कहानी में ट्विस्ट आया था, लेकिन उसके बाद में ये 2 बल्लेबाज डटे हैं मैदान पे। कदमों का इस्तेमाल डाउन द ग्राउंड, और ये चौका। इस बार गोविंद ने भी बाजों को खोला और चौका हासिल किया। गेंद के लाइन की तरफ गए, आगे की ओर आए, कदमों का इस्तेमाल और प्लेसमेंट लॉन्ग ऑफ की दिशा में। एक और चौका, ये तीसरा चौका, इनफैक्ट ये दूसरा चौका, माफ कीजिएगा। पहला चौका सुनील के बल्ले से, फिर गोविंद के बल्ले से भी चौका। 130 लग चुका है बोर्ड पे, अभी भी 8 गेंदे बाकी है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा टोटल चाहेंगे 150 के आसपास का। 8 गेंदों में 20 रन चाहिए उसके लिए, हो सकता है। विकेट जरूर गई है, अभी भी एक गेंद बाकी है इस ओवर में। अच्छा कमबैक है गोविंद, वो बड़ा शॉट खेलना चाहते लेकिन अपनी विकेट गंवाई, और यहाँ पे तो गंवा सकते हैं बिल्कुल। सुनील कुमार ने गंवाई, माफ कीजिएगा, ना कि गोविंद ने। वो थोड़ा सा तालमेल में कमी, उस वजह से जाना पड़ेगा वापिस। 1 रन चुराना चाहेंगे यहाँ पे, और चुरा भी लेंगे, दूसरे के लिए आना चाहेंगे। कितने रन मिले देखने वाली बात है ये।
2 रनों के बीच में 2-3 सफलता आई। 132 पे 4 था स्कोर, उसके बाद में 5 ओवर 30 विकेट इसी ओवर में। 2 बॉल 2 विकेट 2 रन आउट। जो लक्ष्य था वो दिमाग में टोटल चल रहा था 150 के आसपास का, तो वो हो नहीं पाएगा। ये सिंगल चुराना चाहते थे, फुटवर्क का इस्तेमाल, लेकिन सिंगल चुरा लेंगे। केवल 1 रन आया उस ओवर में, आखिरी ओवर चल रही थी। कमाल की गेंदबाजी अमित रावत की, बिल्कुल पकड़ के रखा। 3 डॉट, फिर 2 विकेट, और फिर अंतिम गेंद पे वो सिंगल निकाला। उसके चलते हुए 133 बना पाई आईआईटी कानपुर पहले इनिंग में। क्या ये सफिशिएंट होगा, ये अब आने वाला समय बताएगा। दूसरा इनिंग होगा चालू, कहीं पे भी जाइएगा मत, जहां पे आईआईटी रोपार करेंगे चेस। देखते कौन मारते हैं इस मुकाबले में बाजी। एक छोटा
Warm welcome again. 133 is required from 115 balls. That's the scenario now. And with that wide, one more run is added to the team's total there. IIT ROPAR, they will definitely try to get a victory here. It's well within the range, 130, more than that. But they will surely try to bring a victory in this game. Good over so far. Only 3 runs are coming from this over, as they've got a single on the last ball. Brilliant over from Alok. 3 without loss, IIT ROPAR. At one point of time, we were looking for 140, 150. That's not possible, as last over was again a game changer. Only a run came and 2 wickets, 2 run-outs that happened in that over. Beautiful partnership was building up at one point of time, and then that partnership has been broken down. And after that, back-to-back wickets again coming into the picture. That's why they are not able to get that 150, 140. It's well within the range. 130 for 3 was the score, and then they have lost a couple of wickets because of that. 133 was a total required to chase. Chandan, the new bowler, bowling his second. Sachin Chaudhary is on strike. On the other side, Mudasir. These are the two batters, the opening pair of IIT ROPAR. No pressure will be there on the batters at the moment. They can take their time. They can place the ball into the gap and grab that singles and doubles. That's going to be the strategy. Just try not to play that number of dots. If that's going to get increased, then you can build up the pressure on yourself. Otherwise, things would be easy for IIT ROPAR. And if IIT Kanpur, they want to win this game, then they need that wickets from the start of the game. Wanted to smash that off and gone. The fielder was there at the backward point, and he's not going to miss that opportunity. They've lost a wicket when we were discussing about that. That's going to be a big breakthrough. Got a decent start. The way IIT Kanpur started, they've lost that wicket in the initial phase. Just like that happened in the second innings as well. Chandan got that first breakthrough for the team. 4 for 1 is the score. That is going to be a good wicket. Mudasir haven't got an impact, haven't created that impact. Has got that in the second over. 4 for 1 is the score now. Chandan got his wicket in the first over of his spell. Wicket is the only savior. You can try to get that wickets early when the ball is turning, ball is having that momentum, it's drifting in the air. That's the best possible chance to grab more wickets on the board. That's going to be the plan of IIT Kanpur. And especially if you don't have that much of total on the board, then the wickets
is the go-to option. You have to take that wickets if you want to win this game. Into the slot again. Couldn't grab a run. I think he's gonna grab that. We'll need to check upon that. No, that's a good cover up by another fielder. The backup should be there. Not in sports, but in life as well. You have to have that backup, otherwise things would be tougher to go on. 130 from 110 required. Trying to place the ball there. Wanted that single at least. He's just wanted to open his account. That's why he's just trying to place the ball in the gap, but finding a fielder again and again. That offside is fully packed. A lot of traffic of fielders is there on the offside, and the bowler is trying to hit that areas outside the off stump again. So not given a space to get that singles and doubles. I think this is gonna bring that single on the board, and he's off the mark. He's opened his account finally on the last ball, but an effective over comes to an end. Got a wicket and only 2 runs from that over. Two gone. It's five with a 5 for 1. अच्छी शुरुआत मिल चुकी है यहाँ पे आईआईटी कानपुर को। जिस तरह का दबाव एक्सपेक्ट कर रहे थे वो बनाने में कामयाबी मिल चुकी है। यहाँ से कंटिन्यू करना चाहेंगे ये दबाव, और उसके लिए आपको बिल्कुल जड़ों में गेंद डालनी पड़ेगी। बिल्कुल अच्छे एरियाज को हिट करना पड़ेगा। अभी तक अच्छी शुरुआत दी है दोनों पेसर्स ने। कमाल का ये ड्राइव, कमाल का प्लेसमेंट, टाइमिंग लाजवाब, और देखे जाएगा पूरे 4। ये पहला चौका पुनीत के नाम। काफी आके रखा था और तैयार थे। एकदम गैप को ढूंढ के निकाला। वो 4-5 फील्डर्स हैं मौजूद इनसाइड द सर्कल ऑफ साइड पे, लेकिन देखते रह गए। बॉल चली गई बाहर। उसी दिशा में मारना चाहते थे, लेकिन थोड़ा सा पीछे किया इस बार लेंथ को। तो बल्ले के मुख से बिल्कुल थोड़ा सा पीछे रखा ताकि वो पहुंच ना पाए। अच्छी रणनीति है। जोर से प्रहार करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। प्रेशर बनने देना नहीं चाहते और रन्स चाहिए, क्योंकि वो जो डिफरेंस है वो 20 का है अभी। लेकिन अगर बैक टू बैक डॉट्स होते तो फिर वो दबाव महसूस करने लगते बैटर्स। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए वो चौका हासिल किया। दूसरी छोर से सचिन, वो भी प्रयास उनका वही है कि कैप में प्लेस करे बॉल को, सिंगल्स डबल्स के साथ स्ट्राइक रोटेट करते रहे। पावर प्ले की ये तीसरी ओवर है, क्योंकि यहाँ पे आप थोड़े से रन बटोरना चाहोगे, अच्छी पोजीशन में आना चाहोगे। पुल किया, और ये देखिए कमाल का फुटवर्क, स्टॉप किया। बाउंड्री आई नहीं। इस फील्डर को अगर बीट कर जाते तो कोई फील्डर है नहीं पीछे बाउंड्री लाइन पे। एक में वो फील्डर था वहां पे इनसाइड द सर्कल, और बाखूबी से रोका है बाउंड्री को। आखिरी गेंद इस ओवर की। सिंगल मिल जाएगा। वो संपर्क खास नहीं, लेकिन सिंगल लेने के लिए सही था। 3 के बाद 12 पे 1। पुनीत स्ट्राइक रखेंगे अपने पास अगले ओवर के लिए।
Chandan, he's just trying to get more wickets. He's got 2 runs in the first over of his spell, and then he's got a wicket also. So we'll try to bring more wickets in the initial overs. That is going to be the plan, and that's the only option you have when you are having that low total on the board in the first innings. It's not that low, but still it's well within the range. If one good partnership happens here, it's going to be easy job for the batters to chase down that total. And the bowlers, they know that each and every run matters, each and every ball matters here. So they're just trying to put that pressure. Don't want to grab that singles for the batters. The batters have grabbed that in the previous ball. Good ball. He's very keen. His focus is on hitting that outside of some area. He's just pitching the ball again and again there. Got variety with the length. But line, he's sticking to the basics. He's focusing more on that outside the off some line, and then he's changing the line, again changing the length in the bit. Fuller. Effective bowling. Very effective he is at the moment. He's bowling his second over, not giving that singles and doubles. Is that started off with a single and then 2 dots from Sachin. 3 more balls to go. Wanted to chip that in the air, or just fumbles. Not able to get that ball in his hands in the first take. Otherwise, it would have been a risky run. 120 required from 98, and if the bowlers will get 2-3 wickets here, then the things will turn around. We'll be searching for the wicket. That's the only option to go for. Went for the big here. It's in the gap. Nobody is there in the covers. He knew that exactly. Hasn't got a good connection though, but it's enough to clear the boundary. Lofted shot. He was planning that, just shuffling a bit and got that room. Played that through the covers. Fine, fine shot that is from Punin, and that's the second boundary he scored for the team. Lot of appeal there. Umpire is not interested to raise his finger. He's still staying at the crease. So boundary came in this over. Four gone. It's 18 for 1. IIT ROPAR. Naveen, it's the new bowler coming in, introducing the left arm spinner. Hopefully, is a left arm spinner. Yes, it is. Coming around the wicket in the first ball itself, just to get an angle and pitch in the first delivery. He's always going to create that trouble for the right-handed batters. And you have that option to go for, then you can introduce that. In the previous match, we have seen that how effective the left-arm spinners will be against the right-handed batters. And bowler is able to get that 5 for on his name.
So if you are able to get that good areas, if you're able to hit that good areas, then cherry on top for you because you are gonna hit that angle against the left arm spinners. So it's always trouble you, always troubles the right-handed batters. Have to watch from which finger is releasing the ball. That a lot is dependent on that when the spinners are coming in. You have to watch the wrist, you have to watch the release point so that you will be able to pick that variety. He can turn the ball, he can ball the arm as well. You can keep it straight, you can have that quicker one. So if the bowler has that variation, then you have to identify what he's going to ball by looking at his wrist, by looking at his release point. That is a single that has been taken down. Still a good start, I believe, for IIT Kanpur. Trying to restrict that runs, trying to stop that singles and doubles. Sachin Chaudhary, he's on strike now. Oh, balls him up, cleans that off stump. Just when, how many times we have discussed that left arm spinners always gonna trouble the right-hand batters, and that's the pattern we are able to see in this tournament as well. He kept it fuller. He's appealing for an NPW, but he hits the stumps. Totally dismissed that off stump. Looked at, is having that look at the umpire, and then realizes, oh, I've got a hit on the stumps as well. So no need to appeal that. It's a clear wicket. Pressure is there. It's definitely there on the batters now. Bowlers have done a wonderful job restricting that runs and getting that wickets for the team. 21 for 2 will be the score. Two more balls left. He will try to get more wickets, especially when the new batter is coming in. He's facing the first ball. There is always a chance to get a wicket. Just you need to have that plan in your mind. What ball is you gonna ball in the first. Required rate is of 7.37. They are maintaining at 4.5. Need to increase that, but hasn't got that opportunity to increase that run rate. Yes, the power play is going on, but the way the bowlers are bowling, it's wonderful to watch them bowling in right areas, hitting that wickets, stopping that boundaries as well. Haven't seen that much of boundaries. We are in the fifth over now, the second last over of power play. Two more balls to go in this, and then only one over left in the power play. So at one point of time, the batters would be thinking of scoring that boundaries and the maximums. At the same time, they need to hang in there because they are losing the wickets. Lost two wickets, 21 for 2 is the score. So it's interesting to see that the upcoming batter, what approach he's gonna apply here. Beaten. He's creating that angle. Left arm spinners having that miraculous start again. Magical bowling. Putting that magic to get a wicket. Flight on offer. Just managed to get that pad in between. Hasn't got a chance to stop the single. Tight set off. But the ball finds a way. He's gonna keep a strike with him. He's off the mark with that single. 22 for 2.
after 5. आखिरी ओवर पावर प्ले की, यहाँ पे कोशिश और है कि बैटर्स की थोड़ा सा दबाव रिलीज किया जाए, अच्छी शॉट खेलने लग जाए, लेकिन ये अच्छी तरह से जानते गेंदबाज भी कि कौन सी रणनीति आप अपनाने की कोशिश करेंगे बल्लेबाजी इस ओवर में, तो उस अकॉर्डिंग बॉलिंग करेंगे। अमित दोहराए ओपनर थे वो आईआईटी कानपुर के लिए, अच्छी कोशिश की थी, अच्छे शॉट्स लगा रहे थे, लेकिन उसके बाद में विकेट चली गई। यहाँ पे चाहेंगे फिर कि बॉलिंग के साथ भी उतना ही प्रभावित करे जितना बल्ले के साथ किया था। रन मिलेगा नहीं, वो समय ले सकते हैं योगेश, थोड़ा सा वो स्ट्राइक रोटेट करके बस स्ट्राइक दीजिए पुनीत को। वो सेट हो चुके अच्छे खासे बाउंड्रीज आई है उनके बल्ले से, 2 बाउंड्रीज हमने देखे अब तक, तो चाहेंगे एक आध और यहाँ पे इस ओवर में मारे जाए। नहीं, फॉलो किया बैट को, वो रूम बनाना चाहते थे, कवर्स की दिशा में खेलना चाहते थे बॉल को, तो फिर पैरों के ऊपर गेंद रखा, बिल्कुल फॉलो किया बैट को, कोई मौका नहीं बाजू को खोलने का। सिंगल पटोर लेंगे, यहाँ पे मिल जाएगा, काम कर गए, लेकिन 3 बॉल खा लिए उसमें, कहीं ना कहीं अब 3 बॉल बचे पावर प्ले में, तो अगर बड़ा शॉट आना है इस ओवर में तो फिर वो सेटअप करने के लिए समय मिला नहीं पुनीत को। खराब बॉल का इंतजार करेंगे या फिर थोड़ी सी रिस्क लेके लॉफ्टेड शॉट के लिए जाएंगे, ये अब देखने वाली बात है। अच्छा बॉल था, रिस्पेक्ट किया, सिंगल ही मिल पाएगा। अच्छी ओवर, ये पहली ओवर डाल रहे अमित दोहराए, और वो भी पावर प्ले की आखिरी ओवर है, तो कंधों के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी थी, लेकिन अभी तक अच्छे से निभाते हुए उसको 2 सिंगल्स दिए अब तक इस ओवर में, 2 गेंदे बाकी। शॉट तो काफी बढ़िया था, ये गैप में चली जाएगी गेंद, रोक नहीं पाओगे आप, ये चौका मिल गया योगेश कुमार को। गेंद में कोई खराबी थी नहीं, जस्ट एक शॉट बेहतरीन था, दर्शनीय शॉट, बाउंड्री की तलाश थी इस ओवर में और आई है, और योगेश के बैट से आई है, पूरा प्रयास, लेकिन जिस तरह से गेंद चली जा रही थी, एक पेस के साथ चली जा रही थी, तो फिर उसको रोकना नामुमकिन था। आखिरी गेंद पावर प्ले की, क्या होगा इस पे, एक बड़ा शॉट मारने के लिए जाएंगे या फिर संतुष्ट रहेंगे, क्योंकि पिछले ओवर में पिछले बॉल पे इनफैक्ट चौका आया था। ये देखिए डॉट बिल्कुल छेड़ों में, एक बाउंड्री जरूर आई, लेकिन पावर प्ले के आखिरी ओवर में केवल 6 रन। अमित की कमाल की गेंदबाजी, 28 पे 2 है आईआईटी रोपार 6 के बाद। ये पावर प्ले में कहीं ना कहीं जीत हुई है बॉलर्स की, जिस तरह से पकड़ के रखा हुआ है, 2 विकेट भी चटकाए, तो ये बड़ी बात है। रन्स के ऊपर थोड़ी सी रोक लगाने में कामयाब, लेकिन उससे भी बेहतरीन चीज की 2 विकेट चटकाई है। 1 विकेट डॉक्टर नवीन कुमार गुदे के नाम, लेफ्ट आर्म स्पिनर, अच्छी गेंदबाजी पहले ही ओवर में, और चाहेंगे और सफलता अपनी टीम के लिए प्राप्त करे। पुनीत अच्छी लय में लग रहे, योगेश कुमार के बल्ले से वो पहला चौका आया पिछले ओवर में, अब फील्ड खुलेगी, यहाँ से आप सिंगल्स डबल्स आसानी से प्राप्त कर सकते हो, अगर आप अच्छा प्लेस कर सकते हो बॉल को गैप में, तो फिर वो आसानी से सिंगल्स डबल्स, स्ट्राइक रोटेशन को चलता रखना पड़ेगा, चाहे कौन सा भी कितना भी टोटल हो,
कम टोटल क्यों ना हो बोर्ड पे, लेकिन आप ज्यादा डॉट्स खेल नहीं सकते, यही एक आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। लॉन्ग ऑफ की दिशा में प्लेस किया, सिंगल मिल जाएगी। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे बिल्कुल। स्ट्राइक रोटेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस गेम का। चाहे कौन सा भी बड़ा क्रिकेटर हो, बड़ा नाम हो, आप हर एक गेंद पे बड़ा प्रहार नहीं कर सकते, शुरुआती ओवर्स में खासकर। तो फिर स्ट्राइक रोटेशन आपको मदद करता है। जितना आप उसके ऊपर फोकस करोगे तो फिर वो दबाव नहीं बनता आपके ऊपर। और उसके बाद में आप अगर गेम को डीप ले जा पाते हो सिंगल चप्पल के साथ, फिर आपके पास वो लाइसेंस रहता है। 15 ओवर तक आप डटे रहे, पार्टनरशिप बिल्ड की, हर एक बॉल पे सिंगल्स डबल्स की कोशिश की, तो फिर आने वाले समय में वो बड़ा शॉट आप आसानी से लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर विकेट गई तो फिर वो दबाव बढ़ता है आने वाले बल्लेबाजों के ऊपर भी, फिर वो भी कुछ बड़ा करने के लिए जाते हैं, क्योंकि फिर वो डॉट परसेंटेज भी आपका बढ़ा हुआ होता है। स्ट्राइक रोटेशन आपने किया नहीं होता है, आप बड़े शॉट के चक्कर में कहीं ना कहीं ज्यादा डॉट खेल जाते हो, और ये फायदा देके जाता है बॉलिंग यूनिट को। लेकिन इस ओवर में देखिए 4 सिंगल, 4 बॉल 4 सिंगल्स, ये सही रणनीति। ये वाइड होगा, गेंद अटक गई पैड्स में कीपर के, उस वजह से तोहफा मिला नहीं। काफी नीचे रही थी इस बार गेंद, लेकिन डाउन द लेग उस वजह से फिर से डालनी पड़ेगी। 5 रन आ चुके, 2 गेंदें अभी बाकी है। अब सिंगल्स डबल 4-5 गेंदों में निकालते हो, फिर आपको एक खराब गेंद मिलती है तो फिर वो चौका आप हासिल कर सकते हो। 8-9 रन आसानी से प्राप्त करते हो आप हर एक ओवर में बिना रिस्क लेके। इस बार रिस्क लिखा है, हवाई फायर, एक और चौका पुनीत के बल्ले से। हैंड आई कोऑर्डिनेशन अद्भुत, फ्लाइट थोड़ी सी दी थी उसको, एक्सेप्ट किया इनविटेशन को और तोहफे को इस लिहाज से कबूला है। के बारे में चर्चा कर रहे थे, अभी अभी हमने बात की थी कि एक खराब गेंद आएगी तो फिर वहां पे आप बड़ा प्रहार कर सकते हो अगर आपने पहले 4 गेंदों को रिस्पेक्ट दिया, सिंगल्स डबल्स के साथ स्ट्राइक रोटेट किया, तो फिर एक चौका आता है हर एक ओवर में, ये पकड़ के चलिए। तो वैसे भी आप रन हासिल कर सकते हो, और क्या बाखूबी से खेला इस शॉट को, बाजों को खोला, बैकफुट पे गए और वेट ट्रांसफर करते हुए, दिशा दिखाते हुए और चौका। ये बड़ी ओवर, 2 चौके और 5 सिंगल, काफी दूर से खेला था लेकिन स्वीट स्पॉट, वो साउंड देखिए बैट का, कोई था नहीं वहां पे, पूरी जगह खाली थी, आसानी से चौका, कॉन्सेक्यूटिव बाउंड्रीज, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। 7 के बाद 41 पे 2, IIT रोपार। The pressure is gone for now. The way he's batting, the way he batted and scored that 2 consecutive boundaries in the previous over, it's definitely gonna reduce that plenty of pressure. Because at one point of time they were 28 for 2. So the power play is on the name of the IIT Kanpur. They've got that 2 wickets, and then in the next over, he's smashing that boundaries. So I think he was waiting for the field to open up. So it is getting more easy for him to get that boundaries after a power play. That's what we have seen, because that's the next over where the end of power play was there. The field is open and now he's hammering the ball into the sky and getting that boundaries. 93 required from 78.
is still well within the range. If Puneet is able to hang in there in the last moment, and then he's gonna win this game for the team. Still have that 30 more overs. Amit Dohrai is having that confidence in him that he can bring that wicket, and he should. The bowlers will have to try to take more wickets. Otherwise, Puneet is looking in his zone. He's able to find that rhythm and smashing the ball into the sky, getting the boundaries, getting that runs on the board. They're clinching towards the required run rate here. Single has been taken for sure. The backup fielder is right there at the boundary line, so he's not going to get a boundary, but surely grabbing a single. हवा में इस बार भी क्या वो कैच हो सकता है? नहीं, थोड़ा सा दूर देके जाएगा 4, रोकने में नाकामयाब. लॉफ्टेड शॉट एक बार फिर से पुनीत के बल्ले से. गेंद आगे गिरी थोड़ी सी फील्डर से और फिर रोक नहीं पाए. थोड़ा सा अतिरिक्त बाउंस मिसजज किया, वो समझ नहीं पाए कितना बाउंस होगा. देखिए रिक्वायर्ड रन रेट एक 6.95 का है और अभी मौजूदा 6.27 का. अगर ऐसे बाउंड्रीज आए तो फिर कहानी खत्म है. एक ही चीज बचा सकती है आईआईटी कानपुर को, तो वो है विकेट्स. जितने जल्दी आप विकेट्स लोगे तो फिर उतने जल्दी ही आप इस गेम में वापस आ सकोगे. जैसे आपने कारनामा किया था पावर प्ले में, वैसे ही आगे रखने की कोशिश करनी पड़ेगी. दबाव बना था पावर प्ले में, उस दबाव को कंटिन्यू रखना पड़ेगा. अदरवाइज वो जो टोटल है वो आसानी से प्राप्त करेंगे दो बल्लेबाज. और अभी फील्ड खुली है उस वजह से वो सिंगल्स आ रही है. सिंगल्स आ रही है तो वो दबाव नहीं बढ़ेगा. एक रन आसानी से प्राप्त करेंगे. यही एक रणनीति होनी चाहिए. एक बाउंड्रीज आप मार चुके, फिर 4 सिंगल्स, तो 8 रन वैसे भी आप करने में कामयाब हो रहे हो. और पहले 2 गेंदों के ऊपर अगर आप बड़ा शॉट खेल सकते हो तो फिर वो सोने पे सुहागा, क्योंकि आने वाले समय में आपको पता है कि एक एक रन से काम बन जाएगा. एक बार फिर से हवा में खेला है, फील्डर मौजूद, एक मिल पाएगा आसानी से, दूसरे के लिए भी आएंगे. छिटक गई गेंद हाथों से, पकड़ नहीं पाए हाथों में. सिंगल्स को डबल्स में कन्वर्ट किया है और 50 रन लग गए बोर्ड पे उसके चलते हुए. कमाल की बल्लेबाजी. 2 विकेट जल्दी गिरी थी, लेकिन उसके बाद में पुनीत ने प्रभावित किया और योगेश कुमार ने अच्छा साथ दिया है. उनके नाम भी एक बाउंड्री. कहीं ना कहीं यहाँ पे आईआईटी कानपुर को विकेट चाहिए इस गेम में अगर वापस आना है तो. पार्टनरशिप चाहिए होती है हमेशा आपको, कौन सा भी स्पोर्ट्स हो. और यहाँ पे पार्टनरशिप पनप रही है. इस पार्टनरशिप को एक बार फिर से रोक लगाना पड़ेगा इसके ऊपर, नहीं तो फिर वो आसानी से इस टोटल तक पहुंच पाएंगे. ज्यादा डिफरेंस अब है नहीं, 10 का लगभग 10 का डिफरेंस है. रिक्वायर्ड बॉल्स, रिक्वायर्ड रन्स और बॉल्स रिमेनिंग, अगर आप वो सिनेरियो देखोगे तो फिर आपको पता चलेगा ज्यादा डिफरेंस है नहीं. Puneet is on strike, I think. Swing and a miss.
51 for 2. That's the update we have received. Dot to start that over. Pratik Shukla, the new bowler. This is the right arm spinner. Smashed. Oh, there was a chance. Missed that. It was a tough one to collect. He's not in a good position to collect that ball. Wanted that single, but he has to wait there. That's a good call by the non-strikers in. 52 for 2. Still, we have 82 required from 69 balls. One good over can change a lot of things here. If Pratik is able to take that wicket, then we can see that change. The gap is going to increase then. But these two batters will try not to lose the wicket now. They also know the importance of not losing the wicket. Oh, just a fumble and they converted that into double. Conversion is so good. Running between the wickets is important aspect and you have to have that attention to that. And they're paying that attention. Waiting for the fielders to make a mistake. And just a mistake, just a fumble and they will try to run for the second. Last ball, 54 for 2. 80 required from 67. 3 runs came from this over. That's a good over so far. We'll be having that Sweden. Yes, having that Sweden is surely gonna get a single, giving that strike in the next over. 55 for 2 after 9. IIT ROPAR. Sunil Kumar has got a pretty good. He scored that pretty good runs with the bat, and now he's ready with the ball there. Got a single on the first ball, then still have that 5 balls. Too much flight on offer. He just smashes that out towards the long off. Only a single. Important strategy here. Placing the ball and getting a single on each and every ball. That's the strategy. And it's working for them. Now they will wait for the bat ball to come. That's straight up in there. Takes the aerial route. Nobody's there to catch the ball. Waiting for the double and got it. Got it nicely. Coming back for the third. And he's not happy with that fielding there. The throw would have been proper. If the throw was throw would be proper, then would have been the third wicket coming because he was nowhere in the frame when the ball is coming towards the bowler. Taken that free in this occasion. Gone. He's just appealing for that, but I think he's safe. He's safe. A quick stumping by the keeper at the back. Just within the fraction of a second, he's able to get that stumping, but he's safe.
He's staying there in the crease, just trying to shuffling in to cut that ball into the point to get more runs. That's straight again. He's gonna find a fielder. We'll have to settle down the single there. Half of the innings is done here. Is 62 for 2. Alright, ROPAR. Still that 72 required from 60. So difference of 12 is there between the required runs and the ball remaining. One more ball to go, I believe. There's one more is left in the 10th. It's the ball again. Coming back for the second, I believe. Yes, they've completed that, and he's not happy with that. 8 runs game just by scoring, just by tapping the ball in the gap and getting that singles, doubles. The focus will be given on singles and doubles. They will try not to play the dots. Rest of all they are doing is good. Team gone, it's 62 for 2. Alright, ROPAR. अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड हो रही है यहाँ पे. एक छोटा सा ब्रेक था रिफ्रेशमेंट के लिए और रिफ्रेश हो चुके प्लेयर्स और उसी में रणनीति भी बनाई होगी कि क्या कुछ अलग कर सकते हैं विकेट चटकाने के लिए. क्या वो विकेट आ पाएगा? इस समय पे बहुमूल्य होगा वो विकेट. और दूसरे एंड से अगर देखोगे तो बैटर्स की सोच यही रही कि फिर वो विकेट ना गवाए और जैसा अभी चल रहा है वैसे चलने दे. ज्यादा रन्स है नहीं बोर्ड पे, 72 चाहिए 60 गेंदों में, तो फिर वो आसानी से हो सकते हैं. जैसे आप खेल रहे हो अभी सिंगल्स डबल्स के साथ, एक खराब गेंद का इंतजार, वहां पे बाउंड्री की कोशिश, तो वैसे ही करते रहिए आखिर तक आपका काम हो जाएगा. प्रतीक शुक्ला फिर से एक बार अटैक में सिंगल के साथ शुरुआत की है. पार्टनरशिप बनाने में ज्यादा ध्यान है और दोनों बल्लेबाज, एक खासियत उनकी ये है कि फिर वो डॉट्स नहीं खेल रहे. सिंगल डबल्स स्ट्राइक को रोटेट करना और फिर एक बड़ा शॉट बाउंड्री, ये प्रयास है. सिंगल पटोना चाहते हैं, यहाँ पे मिक्सअप हुआ लेकिन पहुंच गए अंत में क्रीज के अंदर, बिल्कुल सेफ किया. वो मिक्सअप जब होता है तो कहीं ना कहीं करीबी मामला होता है. इससे कोई दिक्कत होगी नहीं बैटर्स को. वो फील्ड खुली है, उस वजह से सिंगल्स आसानी से प्राप्त कर रहे. आपको विकेट के लिए जाना पड़ेगा. वैसे भी आपके पास ज्यादा रन है नहीं, तो फिर विकेट यहाँ पे आती है तो फिर वो कहानी चेंज हो सकती है.
बड़े शॉट का प्रयास, सीधा खेला है, सीधे बैट से वी शेप में, लेकिन उतना डिस्टेंस था नहीं, वो दूरी तय नहीं कर पाया। बल्ला हाथों में घुमा कहीं ना कहीं, तो उस वजह से वो संपर्क उतना खास नहीं, लेकिन फिर भी सिंगल मिल जाएगी। कैरम बॉल थी, उसको पिक किया, बल्ले का मुख खोला अंतिम समय पर। हम अंतिम समय तक देख रहे थे बॉल को। चलिए आखिरी गेंद इस ओवर की देखते क्या होता है। ये करीबी मामला, उंगली उठी और जाना पड़ेगा, बहुत बड़ा झटका ये। प्रतीक के नाम बड़ी विकेट, विकेट आएगी तो फिर वो दबाव बढ़ेगा। विकेट दिला दी, एक महत्वपूर्ण काम किया आपने टीम के लिए। कैरम बॉल का प्रयास एक्सपेक्ट किया था नहीं, थोड़ी सी और फ्लाइट दी, गति को कम किया और पहले खेल बैठे उस शॉट को। कहीं ना कहीं प्री डिटरमाइंड थे, वो फाइन लेग को क्लियर करना चाहते थे और यहाँ पे सफलता विकेटों के सामने पाए गए। और ये तीसरी सफलता, और प्रतीक के नाम पहली। 11 के बाद 65 पे 3। क्या यहाँ से कहानी बदलेगी, अब ये देखने वाली बात है। कभी भी 54 गेंदों में 69 रन चाहिए, विकेट चटका दिए, बिल्कुल सही समय पे विकेट चटकाई है। सुनील कुमार कंटिन्यू करेंगे दूसरे छोर से। यहाँ पे अगर पुनीत की भी विकेट आ जाती है तो फिर और दबाव बढ़ेगा। इतनी आसानी से देंगे नहीं विकेट, क्योंकि उनको भी पता है उनका डटे रहना कितना जरूरी। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था, रिस्क लिए थी जरूर, लेकिन पहुंच गए, क्रीज के अंदर पहुंच गए। अमित रावत, इन्होंने काफी अच्छी गेंदबाजी की थी, हमने सबने देखा था कितनी अच्छी गेंदबाजी की थी। वो आखिरी ओवर में शायद वही थे, और एक रन केवल दिया था, 2 विकेट 2 रन आउट हुए थे उस ओवर में। तो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट किया था उस टोटल को, उस वजह से। All eyes on this batter now, because they've lost a wicket in the previous over. What approach he's going to apply, that's interesting to see. He's just targeting that gap, going for the lofted shot on the swing on the first ball, showing that intention that he's going to play that lofted shots. Went up, hasn't got a good connection with the bat there. The single has been taken down. Have to settle with that. The gap of 14 and 15 is there between the required runs and the remaining balls. Have to play with that soft hands. A single has been taken down easily, and they have to settle down with that. We have got 19 fours and a maximum in this over, in this match. Apologies for that. Sunil Kumar is fantastic so far. The batters are also doing their job pretty much beautifully, because 4 singles have been taken down, 2 more balls to go.
That takes the aerial route just away from the fielder. Would have been the fourth wicket then, but it's out of his reach. He tried his level best, but not able to get his wicket. Not able to get that catch. 5 singles so far from this over. In the need of that big shot. Trying to take a single very quickly so that they will be in a position to get that double, but they will settle down with the single itself because the ball went into the hands of the fielder. 12 gone, 6 singles from this over, 71 for 3 at ROPAR. थोड़ा सा रोक लगी है जरूर रनों पे और डिफरेंस बढ़ा है। एक समय पे वो 10 के आसपास था, अब 15 के आसपास है। 12 ओवर्स में 71 पे 3 है स्कोर। अभी भी एक डिसेंट टोटल है, लेकिन वो विकेट आई है उस वजह से कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा रोक लगेगी दोनों के ऊपर। वो बाउंड्रीज जो मार रहे थे वो क्या रोक लगाने में कामयाब होंगे आने वाले ओवर्स में। प्रतीक शुक्ला, इन्होंने ही वो सफलता दिलाई थी पिछले ओवर में जब जरूरत थी टीम को। तो अभी 2 ओवर्स उनके बचे हैं, केवल 7 रन दिए उन्होंने प्रतीक शुक्ला। Trying to get that hard, unable to get that single. I think they've stolen down, have taken a single with that. Yes, they have. One good thing that I've noticed, and you are noticing too, that they are trying to rotate the strike on each and every ball. Just calculate the number of dots, it's very less. That's straight up in the air. Hasn't he got the distance? Yes! Into the nets. He launched into the sky and got a maximum. That's a monstrous hit. He came in a good position, went towards the pitch of the ball and bang! Launch it into the sky to get a maximum. Ball was flowing so smoothly. Got a maximum on that. And a single on the next ball. That's something I would appreciate more. He's not letting the ego coming in. Smashed that a maximum and then single has been taken down. So sticking back to the basics after hitting a good shot. Missed everybody. Couldn't get into the hands of the keeper there. He's very quick with a stumping with the back. Very, very quick. Within the blink of an eye, he's able to get that ball in his hands and then just putting the ball over the stumps. He's ready for the stumping always. Looking for a single, I believe, but unable to get that. The job is done here already in this over. 8 runs they have got, and now they will be focusing more on one more run. 9 to 10 runs. It's enough in each and every over. Smashed it hard. Only a single, I think. Yes, coming back for the second and completes that. Using each and every opportunity there. They saw that the ball is not in the hands of the fielder. It hasn't collected the ball and then ran for the second and completes that. 10 runs came from that over. 13 gone. It's 81 for 3. And with that maximum, they're able to get that difference reduced. They reduce that difference between the required runs and the balls. Now it's 11. The difference of 11 is there between the required runs and the balls remaining.
Chance of a cotton bolt, but it's hard. Just wanted to plug that out of thin air, but that's really possible. He hasn't got that reflex time. Not enough time to catch the ball there. He's still able to get in a good position, but wasn't wasn't enough. Leg cutter coming in, spinning with the fingers over the same position, and it's well within the range now. If you see that scenario, number of runs and the balls remaining, it's in a good position. They have Verma. He is starting off the first over, and two singles have been taken down in the first two balls. Punit, he is playing at 46. With that single, he's gonna come on the 47 now. Only 3 runs away from a deserving half century. Up in the air, and it's in the gap. Just away from the two fielders, pierce the gap nicely to get a boundary. That's something you want to see if you are a supporter of IIT ROPAR. Just pushing the ball, it's just a pitch, but it's safe. Lickada, he saw that, I think, and placed the ball. He timed the ball to perfection. Got a boundary. 3 singles and a boundary. That's the story that we are witnessing here. In the third and the fourth ball of every over, they were planning for the big shot here. And they're getting it. That's interesting. In each and every over, they're planning that shot and they're getting it smoothly. In the previous over, the batter Punit has got that maximum on his name, and now in this over, Amit has got the boundary on the fourth ball. 8 runs already given in this over. One more ball left. Missed that. Dot to end that over. 14 gone, it's 89 for 3. They have brought back Dr. Naveen Gure. He has got that wicket on his name, and now he need that magic arm to get a wicket there. Those two batters, they are doing a great job settling down onto the pitch, spending that time, building a good partnership. 45 required from 36. Difference of 9 is there on the board. Playing according to the conditions, playing according to the required run rate here. They are having that good shot in each and every over, and then they are focusing more on the singles and doubles. Oh, full swing of the bat, hasn't got that connection. Dot to start this over. If IIT Kanpur get a wicket in this occasion, then would be more than happy. Would be a game turning moment. Light, but he smashed the ball literally. But Sunil is well aware of that, where the ball is going. He's exactly in a position, and that's a beautiful stop by him. He's contributing with the bat and then the ball, and now with the field as well, showing the other fielders the importance of a good fielding. Oi, what a kind of a shot that is. Just open the face of the bat. Just wanted to place the ball to the fine leg, but he got lit.
played that half shot, I believe. Hasn't got a good time to play that good shot. Just tap the ball. Punit is playing at 47 from 36. Good set hard. But the fielder is right there. Oh, that is a boundary. You cannot afford that at this stage. They were in the search of the boundary. He slashed it and got a boundary. And with that boundary, he's able to complete his half century as well. He's playing at 51. Got plenty of boundaries and a maximum also on his name. So brilliant batting that is. He's phenomenal totally in this game. Smashed. Long off fielder is interested, but he fell short. Settling down with a single there. That's a good call by Amit. He saw that the ball is going in the hands of the fielder of long off, so would be risky run. So he stopped Punit from getting that double, and it's okay because it's more important to not take a run when in doubt. A single to end that over again. 7 runs came from that over as that was converted into the boundary. That misfield coming in. 96 for 3 is the score. Last 5 overs remaining and now 38 they need. So difference of the 8 is there on the board now. पांच ओवर आखिरी बचे यहाँ पे और 38 रनों की जरूरत है. इस फील्ड आप करना नहीं चाहोगे, खासकर इस स्टेज पे आके, क्योंकि अब हर एक रन मायने रखता है. यहाँ पे अगर आप बाउंड्री रोक नहीं पाओगे तो फिर वो आसान हो जाएगा और बैटर्स के लिए. दबाव बनाने की कोशिश की थी पिछले ओवर में, लेकिन वो बाउंड्री आई, मिसफील्ड हुई, उस वजह से कहीं ना कहीं वो 7 रन आए. ये तो केवल 3 रन आते. तीर की तरफ सीधा, दूरी कितनी है देखने वाली बात है. भाग पड़े और देके जाएगा पूरे 4. एक और चौका, इस बार पहले ही बॉल पे पिक किया था लेंथ को, देखा था कि फुलर है, बल्ले का मुख खोला और ये चौका उनके नाम किया. कमाल की बल्लेबाजी दोनों की. सही समय पे जब भी बॉल अच्छा लग रहा है तो फिर उसके ऊपर बड़ा प्रहार करने की कोशिश. हर एक ओवर में बड़ा प्रहार करने की कोशिश हो रही है और हर एक ओवर में वो सफलता मिली है. 100 लग चुका है बोर्ड पे. वो नजाकत दिखाना चाहते थे, प्रेस करना चाहते थे, इच्छा दिखाना चाहते थे बॉल को, लेकिन हो नहीं पाया. अब 34 रनों की जरूरत है 29 गेंदों में इस मैच को अपने नाम करने के लिए. तो 7 विकेट अपने नाम है, अपने हाथ में. लिक कटर का प्रयास एक बार फिर से, तो स्टॉप किया जरूर है लेकिन ना चोटिल हुए. वो बहुत जोर से खेला था, उंगलियों के ऊपर ज्यादा जोर से लगी होगी गेंद शायद. बहुत जोर से लगी है, उस वजह से फिजियो को बुलाया है, क्योंकि वो लगाई था, इस तरह से बल्ले को घुमाया था, लगाई था, बहुत जोर से खेला है. फिर सीधा जाके लगी है उंगलियों पे, तो फिर थोड़ी सी ट्रीटमेंट लगेगी. स्प्रेस का इस्तेमाल किया जाएगा. 101 पे 3 स्कोर है. 16वीं ओवर चल रही है और पूरी तरह से कंट्रोल में है ये मुकाबला IIT रोपार के. यहाँ पे 1-2 विकेट यहाँ पे गिर जाएंगे तो फिर
वो उम्मीद हो सकती है IIT कानपुर के लिए। लेकिन जिस अंदाज में खेल रहे ये दो बल्लेबाज, रुकने का नाम ले ले रहे। अमित रावत ने अच्छा सपोर्ट किया है, पुनीत अच्छी बल्लेबाजी कर ही रहे, 52 पे नाबाद। तो ये गेम को आगे बढ़ाने की कोशिश, गेम को आखिरी समय तक लेके जाने की कोशिश, ये बड़े प्लेयर बनाती है, ये बड़े प्लेयर की निशानी होती है। 20 ओवर पूरा खेलना चाहते, अंतिम समय तक गेम को लेके जाना चाहते हो आप, तो फिर मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जीत हासिल होती है। कि फिर आपको ऑटोमेटिकली ख्याल आने लगते कि हाँ, मुझे बड़े इनिंग खेलनी है, मुझे आखिर तक डटे रहना है। तो उस लिहाज से आप अपने शॉट को एडजस्ट करते हो। और अगर आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग खेलने लग गए तो फिर और भी अच्छा है। और यहाँ पे सिचुएशन के अकॉर्डिंग खेल रहे हैं, तो रिक्वायर्ड रन रेट है उसके अकॉर्डिंग खेल रहे हैं। रिक्वायर्ड रन रेट 7-8 का है, तो फिर हर एक ओवर में वो बड़ा शॉट मारने का प्रयास कर रहे हैं और लग भी रहा है अच्छे से। बल्ले को जोर से घुमाया, गैप में है लेकिन एक ही मिल पाएगा, फील्डर तैनात होगा वहां पे कवर्स में। थर्टी टू फ्रॉम 26। Full toss. He just wanted to play towards the onside. The ball races towards the third man and got a boundary. Fortune supports the brave, and that's a brave batting from these two batters. That outside is a thick outside edge game, but one good thing that is he's just in a good position to strike the ball, and he played with a full swing of the bat. That's why the ball slashes off towards the third man. Just wanted to use the bottom hand strongly. Two boundaries came in this over. 10 runs already. Slashed. One more misfield. Converting that single into double now. That is going to prove costly in the end. 12 runs came from that over. 12 runs. Two boundaries and good running between the wickets then. इतने की गड्डी बच चुकी है, ये आप देखना नहीं चाहते। नो बॉल था ये, 2 रन ऑलरेडी भाग चुके हैं और एक और अतिरिक्त मौका मिल चुका है। रन बॉल चाहिए वैसे भी यहाँ पे, और ये बड़ा हिट करने का प्रयास रहेगा। गेंद काफी अच्छी, यहाँ पे जाना पड़ेगा शायद वापिस। नहीं, शायद सेफ है, देखना पड़ेगा। चेक कर रहे हैं, बिल्कुल ये जाना पड़ेगा। काफी आगे खड़े हुए, उसको पता था नहीं कि कहाँ गया गेंद। वो देख रहे थे, उनको लगा कि वो अच्छा हिट हो गया है, तो उस चक्कर में थोड़ा सा आगे आ गए और फिर स्टंपिंग हो गई पीछे। वो सफलता चाहिए थी, सफलता आई है, लेकिन अब यहाँ से गेम को अपने तरफ खींचने के लिए एक और विकेट चाहिए। 109 लग चुका है बोर्ड पे। देखना पड़ेगा, एक अपडेट जरूर होगा, स्कोर बोर्ड अपडेट होने का इंतजार करते, लेकिन रन बॉल चाहिए यहाँ से बिल्कुल। तो चाहेंगे ये मुकाबला अपने नाम करे, लेकिन ये सही समय पे सफलता आई है। फ्री हिट की बॉल थी, वहां पे स्टंपिंग आप बिल्कुल कर सकते हो, वो वैलिड रहेगी। स्टंपिंग और रन आउट, ये दो चीजें आपके फेवर में रहती है, चाहे वो फ्री हिट बॉल हो चाहे कौन सा भी बॉल हो। तो स्टंपिंग करने का प्रयास और उसमें सफलता भी मिली है।
16 gone. It's 109 for 4 is the score. Pratik Shukla is going to complete his spell in this over itself, and he's able to get that one more wicket then. Cherry on top for them. It's a free hit ball, the last ball of the previous over, and he got out on that because he got stumped by the keeper. Loud of appeal, that is. Loud of appeal. But not given. How quickly he's able to turn the ball into the stumps. I mean, it's still unbelievable. I'm still thinking of that. He's very quick at the back. Slashed. Oh, that should have been stopped. That should have been stopped. Another boundary coming in. Slightly misfilled, and you're going to harm yourself with that. That's need to be stopped. And the bowler would be disappointed with that. His single has been taken here. 57, and now with that single, he's going to complete that. He's going to complete that single, and now 58 is going to be. Boundary came in this over too. It doesn't matter they have lost a wicket or not. He's just trying to get that big shot in each and every over. And the fielders in the previous over supported that shot because that should have been stopped. That extra bounce is there when the ball hits the ground, and he hasn't identified that. Well, that goes wide. Hits the body of the keeper. He saved a couple of runs for the team. That is wide that has been given. And extra run has been taken down in that. So each and every run matters from here on. 2 runs in total they will be getting. Towards the long off. Only a single is going to keep that strike in the next over. Now 17 required from 18. That is the scenario that we are having here. So almost in a good control. 59 from 42. Wonderful innings he's playing. And he's not going to stop. He just want to win that match for the team. 17 gone. It's 117 for 4. IIT ROPAR. Smashed. Launched a rocket from the bat. That's electrifying shot on the very first ball. Boundary on the first ball there. It doesn't matter for him now who is bowling, who is not. It only matters for him to score that runs and finish that off. 13 required. Aiming towards the victory now. IIT ROPAR. Went for the big again. Finds a failure. Only a single is possible in that. He's now just in a hurry to complete that total within the 20 over itself.
chipped it nicely. No need to take that risk. He exactly knows that. It's in a full control of IIT ROPAR. They know exactly what needs to be done and they are playing accordingly. 11 runs short from getting a victory. And again, the same plan we are able to see here. I think Sunil is going to take up a charge here. He's going to aim for one more big shot in this over itself. Oh, gone! One more wicket came. That's a beautiful ball from Sunil. He kept it away. That back of length, he saw that he's coming. He's coming towards the line of the ball. Oh, so he shifts that line to the backwards and got a wicket. One more stumping. Excellent take by the keeper at the back, and now that's the fifth wicket that falls. Still the hope is high or not. We'll be able to see in the upcoming balls now. They've got set batter out Punit. He was playing at a good level. 64 he has got from 46. And with that innings, he complete his innings. 11 required from 15 now. And they able to make a comeback from here. That's what we need to see now. Because two new batters will be there on the crease. It's not that hard. Because 11 runs required and we still have that 15 more balls. 14 more balls in fact. So it's still well within the range. So need to hang in there. Just place the ball into the gap and get that runs. Don't try to go for that lofted shot. Beautiful placement. He's surely going to get a single. We'll try to come back for the second. No. Denies that. No need to take that risky run. You are under full control. It doesn't matter what has happened in the previous ball. Just focus on the present. Just focus on the runs required and the balls remaining. And you will be achieving the victory. Last ball of this over. That's up in the air. That should have been taken. Oh, just away from the fielder at the infield. The chance has been created, but couldn't take it. Couldn't taken by the fielder. 18 gone. It's 124, 125 for 5 now. 9 required from 12 balls. Amit is going to ball another over. It's still under control of IIT ROPAR. One more wicket can change a lot of things here. Jasprit Singh and Gaurav Datta. These are the two new batters. All they need to do is place the ball and get a single on each and every ball. He's surely going to get that in this ball. We'll try to come back for the second, I think. No, I have to settle down the single. Singles can do a lot of work for them. 8 from 11 now. Jasprit Singh is on strike. Surely one more single they will take. It came from the mid of the pad and it's easy for him to take that single. The field is widely open there. One more single. That's a good batting. That's something you want to see. They're not taking that risks to get that singles and doubles.
just placing the ball in the gap and getting that easily. That's how you should they should go. 6 more required from 9. That's straight up in the air. Went for the lofted shot, and that's a maximum. That's the end of the story. I think that they've got a boundary. Still 2 runs required. Still 2 runs required, but that's a beautiful shot. He's just want to finish that things early. Beautiful timing, strong use of Waterman. The longer fielder was there, but he has to watch the ball going away. Just a bounce, maybe inside the boundary. Coming back for the second there. Wait, they need to wait. One more ball is left here. The scores are on level. They are just single run away to get a bound, get a victory in this game. Again a stumping. Again a stumping. That's the third stumping done by the keeper there. Amit Dohrai has got a wicket. He's filled the column, but it doesn't matter at all now because a run required and one more over is left. He kept it away from his arc nicely. He just wanted to push the ball on the onside, and he lost his wicket as he hasn't got a connection. He was expecting a spin. The ball went straight. That's why that's the 6th wicket they have lost. The scores are on level now. Sumanendra Singh is on strike. Gaurav Datta is on the non-strike position, and I think Sumanendra Singh is going to finish that off. Or Gaurav Datta. I think Gaurav Datta is on strike. Yes, Gaurav Datta is on strike. Sumanendra Singh is just coming in. He's going to be on the nice non-strike position. Bang! Ends that up with a boundary. That's a beautiful shot. That's a winning shot came from Gaurav's bat. And here they go. IIT ROPAR. They're able to surpass the target and got a victory. And that's the time for the celebration here. Much required win for them. And Gaurav Datta is phenomenal. He's hitting the ball so well. They have lost the wicket so, and he's just carrying that. He's just having that final touch on the board. And here they go. The celebration started. IIT ROPAR won this game by 4 wickets. IIT Kanpur, tough luck for that. They played well. Both the teams worked hard. And in the end, IIT ROPAR able to get a victory in this game. That's a winning shot. Sliced the ball hard into the gap and got a boundary. Well, thank you for joining in here. That's it from today's game. I hope you enjoyed this game. We'll see you tomorrow. So don't forget to catch us live on IIT Sports with YouTube channel. This is Shubhankar Bhatt signing off for today. कर दूं बंद ठीक है